गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो डिस्क्रिप्शन देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किस बारे में है। मैं उससे पहले वीडियो से पहले मैं आपको कुछ डिस्क्लेमर्स देना चाहती हूँ। पहला ये कि मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये कर रही हूँ और सिचुएशन ऐसी है कि करना पड़ रहा है, मतलब कोई खुशी से नहीं कर रही हूँ, मैं ये करना पड़ रहा है क्योंकि हम बाहर जा नहीं सकते और घर में अब बहुत ज़्यादा रफ हो गए थे बाल मेरे। हाँ, तो कुछ ये चीज़ है कि मेरे बाल जो थे वो बहुत ज़्यादा थिन हो गए थे नीचे से। लेंथ तो अच्छी खासी मेरी बढ़ गई थी लॉकडाउन में, बट बहुत पतले हो गए थे नीचे से। सो दैट वाज द रीज़न आई थॉट टू गिव इट अ ट्रिम। बट मैंने पहले सिर्फ ट्रिम किया था तो उससे भी वो बहुत पतले पतले से लग रहे थे, तो आई थॉट कि मैं इसको एक लेयर में कट करके ट्राई करती हूँ। सो मैंने फर्स्ट टाइम किया था। मैंने कोई प्रोफेशनल सीजर या ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया, नॉर्मल सीजर जो हम घर में यूज़ करते हैं वो यूज़ किया मैंने। और बस दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है कि हमारे बाल प्रॉपर्ली वॉश्ड और प्रॉपर्ली ड्राइड होने चाहिए, और हमने कंडीशनर या कुछ भी अच्छा सा, मतलब जो भी हम यूज़ करें कंडीशनर या सेरम वो यूज़ कर लें। और दूसरी चीज़, हमें कोई स्ट्रेटनिंग या कोई भी कर्लिंग नहीं होनी चाहिए बाल में। हमारा जो नेचुरल टेक्सचर है बाल का वो होना चाहिए। अदरवाइज हम कोई स्ट्रेटनिंग करके कट करेंगे तो फिर वापस जब हमारा बाल हमारे जो नेचुरल टेक्सचर में आएंगे तो डिफरेंस आ जाता है फिर वो। सो ये दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। और बाकी चीज़ें हम वीडियो में देखते हैं क्या किया मैंने। हाँ, बट मैंने फर्स्ट टाइम किया उस हिसाब से मुझे अच्छा लगा और मैं सेटिस्फाइड हूँ इस कट से। सो यू माइट फाइंड इट हेल्पफुल फॉर यू। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गो अहेड एंड सी हाउ आई डिड इट। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको एक लाइक करना और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये कट कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। थैंक यू। So the very first step I'm going to do here is I will nicely comb my hair and center part my hair, divide the hair in two equal sections first and make sure there should be no tangles, and then I will be dividing the front crown section into two sections. So total we'll be dividing my hairs in three sections, two in the front and one in the back. The back section I will be tying in a tight ponytail. So we have to make sure that there should be no tangles here. Okay, so now I have tied the hairs in the ponytail, and we will be working on this crown section first. So the very first thing I will be going to do here is I will take a small section and cut it, and that first section will act as a guide for rest of the hair. Okay, so when I'll do the rest of the process, then only you can understand. So I'm taking this small rectangular section from the tip of the crown and I will just comb it nicely, and then I'll go upside and I'll cut this small section from the top, and it's done. So this section will be acting as a guide for rest of the hair. Okay, so like I'll be combing it and I'll see that if I want to cut some more or the length is okay. So I suggest don't cut more at once. And then now I'll mix this guide with this section, and then I'll move it diagonally, and then I'll cut it where the guide is there. Yeah, so I'll stretch the hair diagonally and cut it here like this, where this guide hair meets. So this is how it is. The first section is done, and I'll do the same process for the other section as well. So comb the hair nicely, stretch it diagonally and cut where the guide hair meets. It's very simple, guys. Okay, so I cut it like this, and so the front section is done. Now we will be doing
for the back section which I have tied in the ponytail. So I'll open the pony and again divide the back section in 2 halves, and then I will make a pony from the rest of the hair so that it come out of my face and out of my way. So then I will be taking this, the section we have cut, I'll leave the small portion from the back, and then I'll take and then I'll move it upside. So again we have to move it diagonally upside and then cut where the guide hair, we have to cut 2 inch below the guide section. Okay, so see, this section I'm taking to cut first. So here is my guide hair and I'll cut below 2 inches like this. Yeah, so here I'm cutting it this much, and again I'll do the same process for rest of the hairs also. Mix all the hair and then I will cut it. Again this tail kind of thing I'll cut it and remove. You don't need to be very perfect because it's layers, it will automatically, the imperfection makes it more like wavy and kind of effect. It looks very nice. Okay, so now I'm combing this section away and I'll do the same procedure with the next part. Okay, so now I'll open the hair and see, and one last final step is, my length is okay. I have not cut a lot if I talk about the length, and now I'll take make a high ponytail and I'll just cut all the hair. And yes, I will make one, I'll put one more rubber band over here so that it is easy for me to see how much hair I want to cut. So I'll just trim it diagonally, just as it will also help in removing the split ends, and I've just done it. So the more clumsy you get, the more beautiful the layers come, and this is how it looks. I'm pretty much happy with this
haircut and I'm loving it. You can tie it in a half pony, in a full pony, or you can leave it as it is, or even is in a bun. It looks so great, guys. So that's it. I am so loving my hairs. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो मेरा हेयर कट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।